So this is the question number 23 from 2023 midterm English section paper, and this question comes under the topic data types in Python. So in this particular question, you need to differentiate between mutable and immutable data objects in Python. Moreover, you need to give examples related to it. अगर मैं in short बताऊं तो mutable objects क्या होते हैं जिनको आप create करने के बाद change कर सकते हैं, और on the other immutable क्या हो गए आपके जिनको आप change नहीं कर सकते. तो just go through the definition. क्या है आपकी डाटा ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन जो क्या कर सकते हो आप आफ्टर क्रिएशन इसको चेंज कर सकते हो, दैट आर नोन एज म्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल क्या होगा उसके, लिस्ट और डिक्शनरी. सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते आफ्टर क्रिएशन, दोज आर नोन एज इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट्स. जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गए आपके स्ट्रिंग टपल. ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट्स होते क्या क्या है. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.